Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 2A from chapter Compound Interest Without Using Formula. So starting with question number 7, how much will rupees 50,000 amount to in 3 years compounded yearly if the rates for the successive years are 6%, 8% and 10% respectively. So 50,000 amount here, that is the principal amount for 3 years, okay, compounded yearly, and rates for each year is different, interest rate is different, okay. So for first year we'll calculate now, okay. So for first year principal amount is 50,000, rate of interest is 6%, टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर, ओके. 1 ईयर के लिए ये 6% है, फिर बाद में नेक्स्ट ईयर के लिए 8% एंड उसके बाद 10%. सो इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज 50,000 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30, 2 zeros है पीछे. So 3,000 is the interest for the first year. So final amount or amount, whatever you want to write, it's your wish, up to you. In first year कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 50,000 प्लस 3,000. So that gives rupees 53,000. Whenever writing interest and amount, please don't forget the rupee symbol. Okay. So this is the interest and this is the amount for the first year. ये first year का amount हो जाएगा second year का principal. Okay. तो second year के लिए ये principal amount हो जाएगा and then we'll calculate the interest. So for second year principal amount is 53,000 जो previous year का final amount आया था. Rate of interest is 8%. It is changing. Please don't forget, read the question very very carefully. Okay. So second year का interest is 8%. So 53,000 into 8 into 1 upon 100. So 53 into 8 हो जाएगा. So 424 पीछे 0 है, okay. So 4240 is the interest year for the second year. Final amount in second year is principal plus interest. ये प्रिंसिपल इज़ नथिंग बट फाइनल ईयर जो फाइनल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर था, और यू कैन जस्ट राइट डाउन फाइनल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर प्लस द इंटरेस्ट ऑफ दिस ईयर. ठीक है, जो फाइनल अमाउंट था उसी में तो इंटरेस्ट ऐड करेंगे ना, जो पहले का अमाउंट था उसमें और इंटरेस्ट ऐड कर दो तो उतना अमाउंट देना है. ओके. सो फाइनल अमाउंट था 53,000 plus interest is 4240. So that will give 57240. Okay. So this is the final amount in second year. Now 3 years तक बोला गया है. How much will 50,000 amount to? Amount पूछा गया है. ठीक है, मतलब अमाउंट फाइंड करना है, इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना है. सो अमाउंट टू मतलब 3 साल के बाद एक्चुअल में एड अप होके इंटरेस्ट ऐड होके फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर कितना, 3 ईयर्स कितना हो जाएगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो थर्ड ईयर के लिए अब फाइंड आउट करते हैं. दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. ओके. सो फॉर थर्ड ईयर 57240, दैट इज़ व्हाट वी हैड गॉट. Interest is, rate of interest is 10%. Now this will be 57240 into 10 upon 100. Okay.
1 सॉरी 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा. इवन दो द टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. सो डोंट फॉरगेट दिस, मल्टीप्लाइड बाय 1 भी होता है. सो 5724 इज़ द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. अब ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा टू द अमाउंट अप टू दिस ईयर. Okay, so final amount in third year is equal to final amount in second year plus interest, or you can say principal of this year plus interest. Principal of this year is nothing but final amount of the previous year. So 57240 plus 5724. I'm adding it over here only. This is supposed to be the rough work. Okay, horizontal working दिखाना पड़ेगा यहाँ पे. This should be your rough work part. So 62964 is the final amount in third year. So what will this amount to? 50,000. क्या कहाँ तक पहुँचेगा, कितना अमाउंट हो जाएगा इन 3 years आफ्टर एडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट? सो इतना हो जाता है. ओके, फाइनल अमाउंट कितना हो जाता है 3 years में? 62964. So you have to write down the final statement. Rupees 50,000 will amount to rupees 62964 in 3 years. Okay, let's read the next question. Question number 8. Meenal lends rupees 75,000 at CI, that is compound interest, for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years is 15% per year and for the third year it is 16%, calculate the sum Meenal will get at the end of the third year. Everything is given. Principal amount कितने साल के लिए दिया है, the rate of interest for every year. Okay, so all the information is given to us. Now we are asked calculate the sum Meenal will get at the end of the third year. मतलब इंटरेस्ट ऐड करके at the end of the year कितना पैसा उसको वापस मिलेगा. Okay, so in short, final amount in third year is going to be the amount that Meenal will get back. ओके, सारा इंटरेस्ट ऐड होके फाइनल अमाउंट इन थर्ड ईयर हो जाएगा. ओके, सो इट्स वेरी वेरी इजी. जस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है. ओके, इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 3 years का. सो आर एम इज टू ओनली फाइंड अमाउंट ओवर ईयर. ओके, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. सो फर्स्ट ईयर, व्हाट इज द प्रिंसिपल? 75,000. Rate of interest. First 2 years का rate of interest is same 15%. Third year में rate of interest increase हो रहा है, that is it is 16%. So 15%. First year का calculate कर रहे हैं, only 1 year का. Interest is P into R into T upon 100. So that is 75,000 into 15 into 1 upon 100. 0 0 cancel हो जाएगा. 750 into 15. So 75 into 15. 5 5 25, 75 35, 37 0 5 7. तो ये हो जाएगा 1125. ओके, एंड बीच 0 है. सो 11250 इज द इंटरेस्ट. ओके, नाउ फाइनल अमाउंट देखते हैं इन फर्स्ट ईयर. दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज 75,000 प्लस इंटरेस्ट 11250. ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो इतना अमाउंट देना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सो 75,000 प्लस 11250, दैट गिव्स rupees 86250. This amount will become the principal amount for the second year. All right, so 86250 is the principal for the second year. So for second year,
फाइनल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर वॉज 86250. ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल नाउ. सो 86250 into 15 into 1. फर्स्ट 2 years के लिए इंटरेस्ट इज 15%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. ओके, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 5 3 5 2 सो ये आता है 25875. सो 25875 अपॉन 2 है. सो 12937.5 rupees. Don't forget the rupee symbol. Okay, 12,937.5 rupees is the interest for the second year. Okay, that's a lot of amount. Now this plus previous year ka final amount, that is nothing but the principal of this year. Okay, you can just write down principal of this year plus this, or final amount in first year. Second year है ये, सॉरी, फाइनल अमाउंट इन सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? फाइनल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ दिस ईयर, इट डज नॉट मैटर, प्लस इंटरेस्ट. सो फाइनल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इज दिस 86250. आई एम एडिंग ओवर ईयर ओनली. दिस इज रफ वर्क एक्चुअली. 12937.5. You have to show horizontal work. So this gives 99,187.5 rupees. So this is the final amount in second year, okay, including the interest of the 2 years. So now we have to find for the third year the final amount at the end of third year. Okay, so this will become the principal for the third year. Now for the third year, principal is the amount of the previous year, so that is 99,187.5. Rate of interest is changing. For the third year it is 16%, please don't forget. So let us now find out the interest. So it's 99,187.5 into 16 upon 1 upon 100. So 4 4s are 4, 25s are. Okay, now यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, सो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10 करते हैं. ओके, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई 10 तो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बिकम 5 5s are 5, 1s are 5. ओके, 5 9s are 45, 5 8s are 40, 5 3s are 15, 5 7s are 35, and 5 5s are 25. Again it is divisible by 5. ठीक है, 19837, it's, I'll write down over here, into 2 2s are 2 5s are. ठीक है, into 2 upon 5 into 5. So 5 3s are 15. Okay, 5 9s are 45, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 5s are 25. Again it is divisible by 5. 5 7s are 35, 5 9s are 45, 5 3s are 15, and 5 5s are 25. So 7935 into 2 is going to be the interest. So let us find out. So ये हो जाएगा 15870, 7935 into 2. Okay, final amount in third year is final amount in second year. ठीक है, सेकेंड ईयर तक इंटरेस्ट ऐड करके जितना अमाउंट हो रहा है. सो फाइनल अमाउंट इन सेकेंड ईयर इज नथिंग बट अभी का प्रिंसिपल, दैट इज 99,187.5. आई एम doing calculations over here only. You are supposed to show horizontal working. This is the rough part ka working. So 15870. So this gives 1
115057.5. This is the final amount in third year, that is adding up the interest of all these years and the principal amount. This is going to be the final amount. So you have to write down the final statement. The sum Meenal will get back at the end of third year is 1,15,057 rupees and 50 c. Okay, don't forget the rupee symbol. It is very, very important. Okay, otherwise your marks will get cut.